श्रीमद्भागवतम् अद चतुर्थस्कन्धः अद शब्दमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता अभ्यतागी महाभागो भ्रकस्य श्रूयतामिति। श्रीमहादेव उवाच नागं व्रजेशबालानां वर्णयेनानुचिन्तये देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया प्रजापते तत्तशिष्णो भवद्वजगमुखं चिरग मित्रस्य चक्षुषे क्षेद भागं स्वं वर्गिषो भगग पूषा तु यजमानस्य तत्पिचक्षुदपिष्टभुक् देवा प्रकृत सर्वाङ्गा येम उच्चेषणं ततुगो बाहुभ्यामश्विनो पुष्णो हस्ताभ्यां कृतभागवग भवन्त्वन्वर्यवश्चान्ये पस्तमश्रुभृगुर्भवेत्। मैत्रेय उवाच तथा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा विदुष्टमोदितं परिदुष्टात्मभिस्ताद साधु साद्विद्यता ब्रुवन् तदोमीद्वांशमामन्त्र्य शुनाशिरमकर्षिभिः भूयस्तत्तेव यजनं शमेद्वद्वेदसो ययुगो विधायकास्न्येन च तद्यदाग भगवान् भवग सन्ततु कश्यकायेन शवनीयपशोशिरग सन्तीयमाने शिरसे दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सत्यशुद्ध इवोतस्तौ तत्रुषे च अक्रतो मृडं तदा वृषद्वचक्वेश कलिलात्मा प्रजापतिः शिवावलोकादभवत् चरत्र दैवामलक भवस्तवाय कृतधीर् न शक्नोद अनुरागतः औत्कण्ठयात् बाष्पकलया सम्भरेदां सुतां स्मरन् प्रस्रा संस्तप्य च मनग प्रेम विह्वलित श्रुतिः शशं च निर्व्यलीकेन भावनेशं प्रजापतिः दक्षोवाच भूयान् अनुग्रहो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मयि भृतो यदभिपरे प्रलब्धः न ब्रह्मबन्धुष च वां भगवन्नवज्ञा दुभ्यं करे च कुतयेव धृतव्रतेषु विद्या तवो व्रततरान् मुगदस्म बिभ्रान् ब्रह्मा आत्मतत्त्वमभितं प्रथमं त्वमस्राक् तद्ब्राह्मणान् परम सर्वविभत्सु भाषे बालः पशूनिवो प्रकृत्येत दण्डक यो अशो मया विदित तत्त्वतृषा सभाया क्षिप्तो दुरुक्तिविषकै विगनय्य धन्माम् अर्वाक्पदन्तमर्कत्तमनिन्दया भा दृष्ट्या आर्द्रया स भगवान् सुकृतेन दुष्येत्। मैत्रेय उवाच क्षमाभ्यैवं समीत्वांशं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः कर्म सन्तानयामास सौभाग्याय ऋद्विकादिभिः वैष्णवं यज्ञसन्तत्यै त्रिकपालं द्विजोत्तमाः पुरोडाशं निरभवन् वीरशं सर्गशुद्धये अधर्वद्गुणा आर्तः विषा यजमानो विशाम्बते धिया विशुद्धया तत्यौ तदा प्रादुरभूत्कलिः तदा स्वप्रभया देशां योजयन्त्यादिशो दश मुष्णं तेज उपानीत दाक्ष्येन सोऽस्रवाजिना श्यामो हिरण्य अशनो अर्धगीरच्युष्टो नीलालक भ्रमरमण्डितकुण्डलाशक सङ्गाब्ज चक्र सरचाभ कदाशि चर्म व्यग्रै हिरण्मयभुजैरिव कर्णिकारक वक्षस्यधिस्थितवधूर्वनमायुधार हासावलोककलया रमयश्च विश्वं बाष्पप्रमथ्य विजयन सामरराजहंसक स्वेदादपत्र शशिनो बलिरज्यमानक।